told you that there are the main three topics in this lecture. The first topic is mobile computing devices. So, the mobile computing devices are mainly designed to be portable and often to fit on your lap, in your palm of hand, or in your pocket. So that's why we call that mobile computing, means the computing resources which are portable. And with some mobile devices, you can do many of the things, just like a desktop computer can do, just like every each and every applications can be accessed or run just like desktop computers. And there are some of the features of mobile computing devices which are the most important of them is battery backup, because the desktop computers only run or work when the power supply is on. Desktop computer do not have any power backup. But in case of mobile computing devices, they have certain batteries or the power backup. The next feature is the camera. You may capture the photographs and pictures which cannot be possible through desktop computer. Video camera. You may shoot or record videos, video clips, and voice recorders. Voice recorders, you may record your voice, your songs, your any type of chat can be recorded in mobile devices, computing devices. Music players, you may listen, and you can say music is the best way to entertain yourself. Navigation, you may navigate or browse at any time. GPS and location sharing. So these are certain features of mobile computing devices. So now we will discuss few most popular computing devices, and these are even I think everyone is familiar with these devices. But let me discuss one by one all these devices. These are the laptop computers, tablets, smartphones, or you can say mobiles, e-readers, and handheld gaming. So the first one is laptop computers. I think everyone is familiar with laptop, but let me tell you something more. Laptop computer is a personal computer that are easy to carry due to its portability, due to the smaller size, and you can carry the laptop from one place to another place, which cannot be possible in case of desktop computer. But you can run same software, same application, and you can open same type of files in laptop as you can do in desktop computers. The laptop has an all-in-one design, means it has built-in touchpad, it has a keyboard, monitor screen, speaker, Bluetooth, and Wi-Fi. All these are built-in within a laptop. Whereas in a desktop computer, they are connected through the peripheral devices, just like keyboard, mouse, and these are connected externally. And laptop also offers some of that you can make your laptop just to work just like a desktop computer. If you want to uh, make the screen big, then you can contact or you can connect to a big screen using HDMI cable or certain other cables. But if you can remove all these peripherals, you can easily move these this laptop computers from one place to another place. And most laptop have the same type of ports, just like USB, HDMI, high definition multimedia interface, aux port, Firewire is mostly used to connect camcorder or external hard drives. External hard drives, these can transfer the data with some more speed, and some other ports. While in certain laptops, due to the saving the space, these ports can be added using adapter. The next mobile computing device is tablet. So tablet is again designed to offer portability. They provide with a computing experience from different from laptop, because लैपटॉप इज बिगर साइज, यानी ये कहते हैं कि जो टैबलेट्स हैं ये हमारे स्मार्टफोन से तो साइज में बड़े होते हैं,
लेकिन लैपटॉप से साइज में स्मॉलर होते हैं। और जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट के अंदर हमारा जस्ट लाइक लैपटॉप टच पैड और कीबोर्ड नहीं होता, रादर इसके अंदर एक टच स्क्रीन होती है, और वो टच स्क्रीन के अंदर हमारा वर्चुअल कीबोर्ड आता है, जिसके थ्रू हम जो भी टेक्स्ट या डेटा इनपुट करते हैं। और द माउस कैन बी रिप्लेस बाय ए फिंगर। यू कैन मेक अ पॉइंटर यूजिंग फिंगर एंड यू कैन work just like a pointer point by using finger. Yani, the tablets are bigger than smartphones and smaller than laptop, वो जो मैंने बताया था. Like smartphone, you can browse the internet, carry out video conferences, stay connected through emails, read ebooks, you can play games, watch movies, share photos, and listen to the music with tablets. So the basic feature of tablets are mobile operating system, solid state drives, and Wi-Fi. In case of tablets, the mobile operating systems runs and operates just like operating system on desktop computers. And the solid state drive, in case of tablets, the hard drive is replaced by the solid state drive, and the data transfer rate is very faster in case of solid state drives, and the data is durable also. And why? Because the tablets are optimized for internet use, definitely they have built-in Wi-Fi. So now we will discuss about the third device, mobile computing device, that is handheld gaming devices. Handheld gaming devices are again portable and lightweight video game consoles that have built-in game controls, screens and speakers. With the handheld gaming consoles, you can play your favorite console games wherever you are, whether on the move or while someone else is watching the TV. यानी कुछ भी काम करते हुए हम इनके थ्रू गेम खेल सकते हैं. बेसिक एग्जांपल्स और बेसिक जो गेम्स है, जो मोस्ट पॉपुलर गेम्स हैं, निंटेंडो स्विच, एप्पल आईफोन, गूगल पिक्सल, गूगल प्लस, निंटेंडो 2DS, निंटेंडो 3DS, PS Vita एंड मैनी मोर, बहुत सारे और जो हमारे जो हैंडहेल्ड गेम्स हैं. Some of the basic feature of handheld games are online access to free and paid games, access to online movies, TV shows, social media apps like WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, web browsing, freely browse for internet. You can freely browse for internet by using these devices, online and local multiplayer sports. So this is about handheld gaming devices. Next one is some smartphones. The smartphone is a powerful mobile. It is you can say it is a portable device, and it is its size is very smaller compared to tablets or tablets and you can say the laptops. Smartphone is a powerful mobile phones capable of running application in addition to providing with phone services. All the phone services are provided along with the computing services. So these devices are most of the features available on tablets along with cellular internet connectivity. और बहुत सारी हमारे फीचर्स और एक्टिविटीज़ हैं जो स्मार्टफोन को यूज़ करके हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, accessing mails, YouTube videos. We can play games, read ebooks, listen to the music, watch movies, share data, information, and files. So all these activities can be performed using smartphones. So cell phone companies also provide data plans जिनको use करके हम internet access कर सकते हैं. The next device is e-readers. E-readers are certain digital document readers. They are mainly used. They resemble the tablet computers, but they are mainly used or mainly designed for reading the digital documents. E-readers have either LCD display or E-Link display. LCD display, by using LCD display, we can read all type of data, magazines, photos using display, because the LCD display behaves display screen just like a display screen. And the another is e-ink.
that is electronic ink, and it is usually to display in black and white. और जो बाय यूजिंग ई इंक हमें ऐसा लगता है कि हम एक्चुअल पेज को ही एक्सेस कर रहे हैं, बुक के किसी एक्चुअल पेज को जैसे एक्सेस करते हैं ऐसे होगा। और सबसे बड़ा फायदा हमारा ई इंक का क्या है कि जो जो स्क्रीन है हमारी वो बैकलिट नहीं होती। जस्ट लाइक हम मोबाइल के को यूज करते हैं, जैसे अगर हम पूरा बहुत तेज धूप में फुल सन के अंदर हम लोग अगर स्क्रीन ओपन करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस डाउन हो जाती है, और अगर टेक्स्ट को हम रीड करते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन महसूस होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंक है, इट मेनली डिस्प्लेज the data or document almost similar in the sunny or in within any building. So it is very indoor or outdoor में इसकी performance almost same होती है। So it is very useful in case of sunny or some means e-readers के अंदर data format को read करना ज़्यादा comfortable और convenient होता है। So नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। Nowadays, a wireless communication technology has become an integral part of several types of communication devices, as it allows users to communicate even from remote areas. क्योंकि वायरलेस जो कम्युनिकेशन का मेन यूज ही हमारा रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन के लिए होता है। और वायरलेस कम्युनिकेशन इन मोबाइल कंप्यूटिंग में भी एनी ऑफ द फॉलोइंग। First one is satellite, next WiMAX communication, then Wi-Fi communication, Bluetooth, and Zigbee. Let me discuss these one by one. The first one is satellite communication. So, जैसा कि हमें पता है, satellite is a space station that receives microwave signals from an Earth-enabled station. Satellite communication is one of the most popular wireless technologies spread all over the world, allowing users to stay connected virtually anywhere on the earth. The satellite communicate directly with the orbiting satellites via radio signals. So satellite is a little bit costly compared to some other medium, but it provides very fast network services. Satellite allows multiple users to share the same broadcast equipment. तो हमने देखा है कि जब भी हम जैसे हमारे जितने भी मोबाइल बेस स्टेशंस होते हैं, वो all these are the examples of satellite communications. Next communication is WiMAX communication. The full form of WiMAX is Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX is a set of standards which provides multiple physical layer and multiple access control options. It is also known as wireless broadband systems that offers fast web surfing without getting connected through cable or DSL. There are basically two components of the WiMAX communication. First is WiMAX tower, and another is WiMAX receiver. So just like Wi-Fi, WiMAX can connect directly to internet by sending a signal from a WiMAX tower to a WiMAX enabled computer via a wired connections. WiMAX can potentially deliver a data rate of more than 30 megabit per second. The actual cost of data available using WiMAX widely varies according to distance. If the distance is larger, then the cost will be more, and if the distance is shorter, then the cost will be less compared to the larger distance. WiMAX is also one of the versions of 4G wireless available in phones as Sprint's 4G technology. The next communication is Wi-Fi communication. I think almost each and every one of us are very familiar with Wi-Fi. It is a universal wireless network technology that utilizes radio frequencies to transfer the data. Wi-Fi is a form of low-power wireless communication used by many electronic devices such as laptop, handheld devices, smartphones, etc. In Wi-Fi setup, a wireless router
serve as a communication hub. These networks are extremely limited in range due to low power of transmission, allowing users to connect only within close proximity to a router or a signal repeater. यानी एक पर्टिकुलर रेंज होती है और विद इन ए पर्टिकुलर रेंज वाईफाई जो नेटवर्क है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है. वाईफाई अलाउ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन without use of any cables. Wi-Fi is a common home networking applications which provides portability without the need of the cables. हम बार बार कह रहे हैं कि Wi-Fi क्या होता है? Without wires data services provide. Wi-Fi network needs to be secured with passwords क्योंकि Wi-Fi हमारा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होता है तो कोई भी इंट्रूडर्स, कोई unauthorized persons, unauthenticated person can enter into our wireless network और Wi-Fi network. तो उसको restrict करने के लिए there must be certain passwords. So there are certain advantages of Wi-Fi. सबसे पहला हमारा ease of integration and convenience. Next है mobility. With the emergence of public wireless network, users can access the internet even outside their normal working environment. And next one is expandability. ये इसका सबसे बेटर और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर नंबर ऑफ यूजर्स हमारे एक पर्टिकुलर रेंज हमारी सेट की हुई थी हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स की, अगर उस रेंज से उस लिमिट से अगर क्लाइंट्स ज़्यादा हो जाएं तो भी हमारी सर्विस ड्रॉप नहीं होती. सर्विस उन सारे क्लाइंट्स को भी अवेलेबल होती है. स्पीड भले ही रेंज घट जाए लेकिन हमारे सर्विस सभी को प्रोवाइड होती है, जो कि हमारे वायर्ड जो नेटवर्क में ऐसा पॉसिबल नहीं होता. वायर्ड नेटवर्क में तो जितने नंबर ऑफ हमारे क्लाइंट्स के लिए केबल्स लगी हुई थी उन्हीं तक नेटवर्क प्रोवाइड होगा. अगर उससे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं तो वी नीड एडिशनल केबल्स या एडिशनल वायरिंग. तो और डिसएडवांटेज क्या है कि इसका क्योंकि ड्यू टू कॉम्प्लेक्स प्रोपगेशन अफेक्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ इंटरफेरेंस देयर. नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स. मैंने बताया था कि विद इन अ पर्टिकुलर रेंज वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द नेटवर्क यूजिंग द पासवर्ड्स. रेंज विल बी इनसफिशिएंट फॉर ए लार्जर स्ट्रक्चर. हमें रिपीटर का यूज करना पड़ेगा और द स्पीड ऑफ मोस्ट वायरलेस नेटवर्क विल बी स्लोअर देन द वायर्ड नेटवर्क. जो वायर्ड नेटवर्क की है हमारी जो जितना भी हम स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क होता है, एक कनेक्टेड नेटवर्क होता है, उसकी स्पीड हमारी वाईफाई से हमेशा ज़्यादा होती है. Installation of an infrastructure-based wireless network is sometimes complex setup. तो ये हमारे इसके वाईफाई की डिसएडवांटेजेस थी. नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. तो हमें जैसे पता है हम लोग यूज भी करते हैं. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज ए हाई स्पीड लो पावर टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी लिंक दैट इज डिजाइन टू कनेक्ट फोन or other portable equipment together. So Bluetooth technology allows you to connect a variety of different electronic devices wirelessly to a system for the transfer and sharing of the data, and this is the main function of Bluetooth. हम आपने देखा होगा हैंड फ्री ईयरपीस है, वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस है और माइक. these can be connected to either the smartphone or either to laptop. हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं. और ब्लूटूथ का मेनली यूज हमारा कंप्यूटर्स में वायरलेसली कोई भी किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. वी कैन शेयर डेटा एंड इमेजेस, पिक्चर्स, मूवीज़, हम वो भी शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लूटूथ फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. बट द स्पीड ऑफ द transfer of data is not as much high as compared to the Wi-Fi or some other type of wireless networks. The features हमारे use radio wave to communicate between 15 to 50 feet. जो हमारी ब्लूटूथ की रेंज है वो 15 से 50 फीट के बीच में है और it is a low power signal with maximum range of 50 feet. ब्लूटूथ का एक मेन प्रोसेस और मेन खासियत है कि पेयरिंग करनी पड़ती है. विदाउट पेयरिंग ब्लूटूथ हम ब्लूटूथ डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो इट प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर नॉन पेयर्ड ब्लूटूथ डिवाइसेस. जैसे वाईफाई में तो क्या होता था, कोई भी उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर होता तो वो नेटवर्क एक्सेस कर सकता था, लेकिन यहाँ इन केस ऑफ ब्लूटूथ वी हैव टू
make a pair within the particular devices जिनके अंदर हमने डाटा ट्रांसफर करना है. और एक और इसका जो बेनिफिट है कि it only uses power when Bluetooth is in use, means when any data or you can say resource is being transferred. जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तभी हमारा ब्लूटूथ बैटरी कंज्यूम करता है, अदरवाइज it saves the life of the system, battery life of the systems. So next जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, that is Zigbee wireless communication technology. Zigbee is a suite of high-level communication protocol used to create personal area network, small low-powered digital radios. कि हमारा बेसिकली होम ऑटोमेशन, मेडिकल डिवाइस डेटा कलेक्शन एंड अदर लो बैंडविड्थ नीड्स के लिए हम यूज़ करते हैं. व्हीकल ऑटोमेशन के लिए भी हम इस Zigbee कम्युनिकेशंस का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. तो Zigbee is a wireless technology which is mainly designed for low power, low cost wireless sensors and control networks. Zigbee can be used almost anywhere as it is easy to implement and requires little power to operate. Zigbee has a very simple structure like the data from the sensors. There are various features of Zigbee. Zigbee devices are designed for low power consumption. तो बार-बार हम कह ही रहे हैं. Zigbee is used in commercial applications like sensing and monitoring the applications. जो हम लोग कैमराज वगैरह इंस्टॉल्स करते हैं, वहाँ पर भी हमारी Zigbee कम्युनिकेशंस बहुत पॉपुलर है, क्योंकि सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग के केसेस में हम लोग Zigbee को यूज़ करते हैं. Zigbee uses very low power and extremely long device battery life. क्योंकि पावर कम से कम कंज्यूम कर रहा है तो बैटरी बैकअप इसका बहुत ज़्यादा रहेगा. Zigbee gives flexibility to do more with the reliable wireless performance and battery options. The physical needs 10 to 20 meters इसकी जो हमारी रेंज होती है. So this were about the wireless communications, and now we will discuss advantages and disadvantages of wireless communication. There are many advantages, just like quick data can be conveyed or transmitted quickly with a high speed. The internet can be accessed from anywhere and anytime without the need to carry cables or wires, and it improves easy access and productivity. Helpful for doctors, workers, and other professionals working in remote areas, as they can be in touch with medical centers through wireless communication. इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर भी हम वायरलेस कम्युनिकेशंस का यूज़ कर सकते हैं. वायरलेस कम्युनिकेशन की लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि सबसे पहले तो वायरलेस के अंदर कोई भी हैकर या अटैकर इजीली एंटर कर सकता है. दूसरा क्या है कि कोई भी इंट्रूडर्स हमारा अनऑथराइज एक्सेस अगर हो जाती है तो देयर में भी हाई रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ द डेटा. जो हमारा थर्ड टॉपिक है आज के लेक्चर में, दैट इज टाइप्स ऑफ वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन. तो वायरलेस टेक्नोलॉजी डिफाइंस द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट इन एयर विदाउट केबल्स यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. जो हम बार बार कह ही रहे हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर हम मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और विदाउट केबल जो हमारा डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं. विदाउट केबल जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, दैट इज नोन एज वायरलेस transmission. Without the use of wires or electronic conductors, information can be transmitted by using electromagnetic waves. Mobile phones, GPS, Wi-Fi, and cordless cell phones are devices that use wireless transmission to exchange data and information. The following are some wireless data transmissions. First one is infrared, broadcast radio, cellular radio, microwave, communication satellite, and Bluetooth. Now let me discuss one by one. Infrared is a wireless transmission medium that sends signals using infrared light waves. Mobile computers and devices such as mouse, printers, and smartphones often have a IRDA, infrared data association port, that enables the transfer of data from one device to another using infrared light wave. इंफ्रारेड के अंदर क्या होता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड. ये जब जो फाइल साइज अगर हैवी होता है तो इन दैट केस
the data transfer is very slow, or in case of only the small data or light, because light waves carry the data. So स्मॉल डेटा के केस में हम लोग इंफ्रारेड को यूज करते हैं, और अक्सर जो इंफ्रारेड है दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो इंफ्रारेड जो डेटा ट्रांसमिशन है वो उसका जो कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो वहाँ उस केस में ये डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज broadcast radio. Broadcast radio is a wireless transmission medium that distributes radio signals through the air over long distances, such as between cities, regions, and countries, and short distances, such as within an office or a home. Bluetooth, UWB जो अल्ट्रा वाइड बैंड है या वाईफाई है या वाईमैक्स है, these are the examples of the broadcast radio, and ये रेडियो सिग्नल्स के थ्रू सारे का सारा प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेलुलर रेडियो। Cellular radio is a form of broadcast radio that is used widely for mobile communication, especially wireless modems and cell phones. As we know, a cell phone is a telephone device that uses high frequency radio waves to transmit voice and digital data messages. Some mobile users connect their notebook computers or other mobile computers to a cell phones to access the web, send and receive the emails, enter to a chat room, or connect to an office or school network while away from a standard telephone line. The next one is communication satellite. As we have already learned about the satellite communication, so a satellite is a space station that receives microwave signals from an Earth-based station. It amplifies the signals and broadcasts the signals back over to wide area to any number of Earth stations, Earth-based stations. There are two types of transmission in case of satellite. First is uplink and another is downlink. Uplink means transmission from an Earth-based station to a satellite, and downlink means transmission from a satellite to a Earth-based station is a downlink. Application of satellite are air navigation, television, radio broadcast, weather forecasting, video conferencing, paging, global positioning systems, जिसको GPS, just like GPS, and internet connections use communications satellites. With proper satellite dish and a satellite modem card, consumers access the internet using satellite technology. The next one is microwave. As we know, microwaves are radio waves that provides a high-speed signal transmission. Just microwaves are known for their high speed. तो इनके जो rate of transmission of data है, that is 4,500 times faster than the dial-up modem. Microwave station is an earth-based reflective dish that contains antenna, transceivers, and some other equipment necessary for microwave communications. Microwave use line-of-sight transmissions to avoid possible obstructions such as building or mountains, or microwave stations often sit on the top of building, towers, or mountains. Microwave transmission is used in wide open areas such as desert or lake, between building in a closed geographic area, or to communicate with a satellite. Current users of microwave transmission include universities, hospitals, city governments, city television, city cables, and other telephone companies. So there are certain some components of wireless communication. The following may be some of the components. These are antennas, signal strength, signal degradations, and signal type. Signal degradation may be shadowing, reflection, scattering, and diffraction. So this is end of our lecture. I hope, I do believe that you really learn something from this lecture, and in the